Hello students. So today we are going to study about one of the most important topic of the geography, that is known as latitudes. So let's try to understand what is latitudes. Latitudes are basically imaginary lines on the globe Earth due to which we can find the place very easily. Likewise, we have longitudes also. So if you know the latitude and longitude, then precisely you can get the location of any place. So in this lecture, we are going to discuss about the latitudes very briefly, and in the next lecture, we are going to discuss about the longitudes. So let me tell you first about the axis. The Earth rotates about its own axis. That axis has two polarities, North Pole and South Pole. So in this diagram, we can show the North Pole here and the South Pole here. Now this is my Earth. Earth is divided into various important latitudes. The first important latitude is 0 degree latitude. So ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, एंड दिस लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर. और ये जो लैटिट्यूड है इस पूरे अर्थ को दो जोन्स पे डिवाइड कर रही है, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है. अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम above the equator we have northern hemisphere and downwards we have southern hemisphere. Now there are two important latitudes which are known as 23.5 north, which is called Tropic of Cancer, and 66.5 north, which is known as Arctic Circle. Likewise, in the southern hemisphere also 23.5 and 66.5 is important. Here you call these latitude as Tropic of Capricorn. यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एंड दिस वी कॉल इज अंटार्कटिक सर्कल. सो आपको ये चार लैटिट्यूड के नाम पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वी कॉल दीज जोन्स समथिंग लाइक, यहाँ पे क्या होता है कि इक्वेटर के पास में सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ड्यू टू विच देयर इज एक्सट्रीम हॉटनेस, देयर इज हाई टेम्परेचर नियर द इक्वेटर. इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी होती है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा गर्मी होगी तो वाटर बॉडीज जो हैं वहाँ पे इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, और उस इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, रेनफॉल और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस ज़्यादा होगा. सो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर इक्वेटर होने की वजह से गर्मी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है. दैट इज वाई द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरेट जोन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरेट जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है, एंड दिस जोन इज आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रीजन. जब हम 23.5 और 66.5 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है. इट इज नॉट दैट हाई, इट इज नॉट दैट कूल. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस रीजन एज टेम्परेट जोन. ओके, नाउ व्हेन वी क्रॉस 66.5, then we come across with a cold temperature. That is why we are calling this zone as frigid zone. That is why we are calling it a frigid zone. ठीक है. सो आपको ये सारे जोन्स एंड लैटिट्यूड्स याद करने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है 90 डिग्रीज एंड 90 डिग्री साउथ पोल, ये आपके पोल्स हैं. देयर आर टू पोल्स, द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर द पोल्स, एंड दिस एक्सिस, Earth's axis, is perpendicular to the equator. And let me remind you, equator and all other latitudes are the imaginary axis made by the geographers, not by the nature. So obviously, that should be keep in mind. So I hope you are clear with the latitude, because sometimes in the geography it is written as tropical rainforest. So many students get confused, what do you mean by tropical rainforest? Tropical means the region between 23.5 north and 23.5 south. So वो forest आपका इस यहाँ से लेके यहाँ तक पे कहीं भी हो सकता है. That is called tropical rainforest. So ये की इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. टेम्परेट जोन भी आता है, क्लाइमेट चैप्टर क्लास 9 के अंदर आप पढ़ेंगे, उसमें टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल वर्ड बहुत बार आता है. सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस लैटिट्यूड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स. थैंक यू सो मच.